Hello everyone, welcome to HPM classes. Hope you all are doing well. In the previous videos, we have already discussed about essential life processes upon which the life of every organism is dependent. Links have been shared in the description as well as in the I button. Click the links to check the playlist. Today we are going to start a new topic which is excretion, in which we will study in detail about the parts of excretory system and how it works. Every organism need to get rid of gaseous waste generated during photosynthesis or respiration. जो gaseous waste respiration और photosynthesis के दौरान बाहर आता है उसका excretion बहुत ज़रूरी है. Other metabolic activities generate nitrogenous materials which need to be removed. First of all, we will try to understand how the nitrogenous waste is formed. Due to the breakdown of used amino acids and nitrogenous bases, means nucleic acid, which are DNA and RNA, amino groups are formed. These amino groups comes out in the form of ammonia in aquatic organisms, in the form of urea in terrestrial organisms, and in the form of uric acid in reptiles and birds. In higher organisms like us, urea is formed inside the liver, from where it is transported to the kidney and then excreted out of the body. The biological process involved in the removal of these harmful metabolic waste from the body is called excretion. तो इसी harmful nitrogenous waste को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को कहा जाता है excretion. Aquatic organisms can afford to lose water, so they excrete ammonia in the water, which is very much toxic. Aquatic organisms जो पानी में रहते हैं वो पानी का लॉस अफोर्ड कर सकते हैं. वो अमोनिया को डायरेक्टली वाटर में एक्सक्रीट करते हैं, which is very toxic. Terrestrial organisms need to conserve water, so they cannot afford the loss of too much of water, so they excrete it in the form of urea. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में लीवर में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और ट्रांसपोर्ट होता है किडनीज तक और किडनी से बाहर आ जाता है. एंड यूरिया इज लेस टॉक्सिक इन कंपैरिजन टू द अमोनिया. देन इन एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, they need to conserve water because water is necessary for the protection of their embryo in egg. So they release uric acid, which is a white part in their fecal. आपने ध्यान दिया होगा कि बर्ड्स का जो एक्सक्रीटा होता है उसमें ब्लैक पोर्शन इज द फिकस एंड द वाइट पार्ट इज द यूरिक एसिड विच इज लीस्ट टॉक्सिक. Many unicellular organisms remove these waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding water. जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं सिंपल डिफ्यूजन द्वारा उसी पानी में जिसमें वो रहते हैं. In previous videos we have already discussed about diffusion so many times. Undigested food in unicellular animals is excreted when the food vacuole merged with the general body surface and opens to outside. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिन्हें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं उनके फूड वैक्यूल में अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होता है. जब वो फूड वैक्यूल बॉडी सरफेस पे आके टकराता है तो फट जाता है और उसमें से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है. कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू परफॉर्म द सेम फंक्शन. इसी काम को करने के लिए हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं विच वी विल स्टडी फर्दर. नाउ वी विल सी द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. The excretory system of human beings include a pair of kidneys. Here you can see two bean-shaped kidneys in the figure. A pair of ureters. These yellow tubes coming out of kidneys are ureters, which carry urine from the kidneys and open into the urinary bladder. जहाँ पर यूरिन कुछ समय के लिए स्टोर हो जाता है until it is released through urethra. And this is urethra which help in micturition. But micturition is the action of urination. Okay.
So that is the basic procedure which you should know. Now we will see how urine is produced inside the kidneys. यूरिन के बनने का मेन पर्पस होता है वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से बाहर निकालना. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलता है लंग्स में, वैसे ही नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड निकलते हैं ब्लड से किडनीज में. किडनीज एब्डोमेन एरिया में होती है ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन. बैकबोन के दोनों तरफ 2 किडनीज होती हैं बीन शेप, बैकबोन के दोनों साइड्स पर. We have seen that lungs have alveoli which help in removal of carbon dioxide. In the same way, kidneys have nephrons in which the removal of nitrogenous waste takes place. जैसे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर लंग्स की एल्वेलाई में पहुंचता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाता है, वैसे ही नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स ब्लड से किडनी के नेफ्रॉन्स तक पहुँचते हैं और वहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और ब्लड से सारा नाइट्रोजनस वेस्ट अलग हो जाता है और यूरिन के रूप में नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आ जाता है. नेफ्रॉन इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट फाउंड इन किडनीज. नेफ्रॉन किडनी की सबसे छोटी इकाई है. इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. One kidney has almost 1000 number of nephrons. Each nephron has 2 parts, Malpighian tubule and renal tubule. Malpighian capsule or Malpighian tubule is made up of cup-shaped structure which is called as Bowman's capsule, which encloses a cluster of capillaries which are called as glomerulus. Okay, this is also called cluster of capillaries. एक कप शेप बोमेन कैप्सूल और उसमें होता है कैपिलरीज का एक गुच्छा. इन दोनों को मिलाकर बनता है माल्फिजियन कैप्सूल और माल्फिजियन ट्यूब्यूल. होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ वी विल सी हाउ इट वर्क्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लड विल कम टू द बोमेन्स कैप्सूल. द आर्टरी कमिंग टू द बोमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड एज efferent artery and is broader, and this artery which is leaving is narrower and called as efferent artery. Efferent artery along with the efferent artery makes renal artery, the artery which brings blood to the kidneys. So do remember this, efferent artery and efferent artery, they both combine to form renal artery. Now coming blood creates pressure in Bowman's capsule. Efferent artery से आने वाला blood pressure create करता है, जिसकी वजह से ब्लड में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो वाटर के साथ फिल्टर होते हैं और नेक्स्ट ट्यूब्यूल में रिलीज होते हैं. द वेस्ट विच इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट एंड रेस्ट ऑफ द ब्लड लीव्स द बोमेन्स कैप्सूल थ्रू efferent artery. That filtrate is not urine as it contains glucose, amino acids, salts and a major amount of water, out of which some amount will get reabsorbed in further tubules. कुछ amount इन सब का reabsorb हो जाता है, मतलब ब्लड में वापस चला जाता है जैसे जैसे फिल्ट्रेट आगे की ट्यूब्यूल से गुजरता है. Body of land organisms could not tolerate the excretion of too much of water, so some amount needs to be reabsorbed, right? The amount of water reabsorbed depends on how much excess water there is in the body and on how much of dissolved waste there is to be excreted. ये भी डिपेंड करता है कि बॉडी में कितना एक्स्ट्रा वाटर है और कितना वाटर वेस्ट का निकालने के लिए चाहिए. See, these white tubes are the tubules of nephrons and these red and blue tubes are the blood vessels in which the water and other minerals are get reabsorbed. इन्हीं कैपिलरीज में वाटर और दूसरे मटेरियल्स का रीएब्जॉर्प्शन होता है. Filtrate will move through these tubules and while moving the material which need to be reabsorbed will diffuse into the blood capillaries. First of all, the filtration will get started in the Bowman's capsule, जहाँ से blood filter होके proximal tubules में आता है. Proximal convoluted tubules which are also called as PCT. Proximal का मतलब होता है बेटा something that is attached to the main body or which is near to the point of the attachment. Then the filtrate will move towards the loop of Henle, which is the second tubule of the nephron.
जहाँ पे वाटर और मिनरल्स का रीएब्जॉर्प्शन होता है. Then filtrate with further move towards the distal convoluted tubule. Distal means something that is not attached to the main body or something that is far from the point of attachment. You can also call it DCT. Then distal convoluted tubule is attached to the collecting duct. The main purpose of these tubules is to reabsorb nutrients, fluids and other substances that have been filtered from the blood but the body needs them. Then so many nephrons open into a common collecting duct. So many collecting duct open into the renal pelvis. बहुत सारे nephrons बेटा एक common collecting duct में open होते हैं और बहुत सारी collecting ducts renal pelvis में open होती हैं. So here this is the renal pelvis which opens into the ureter and release urine into the ureters. Ureters take this urine towards the urinary bladder. Now the filtrate that finally reaches up to the collecting ducts are actually urine. जो filtrate Bowman's capsule से निकला था वो urine नहीं था. Hope you have understood. The filtrate which is collected in collecting duct after reabsorption is called urine. Hope this is clear to you. But if you still have any doubt, you can ask me in the comments. Urinary bladder is muscular and is surrounded by nerve fibers. So it is under the control of our brain. Means we can urinate according to our wish. Urinary bladder muscular होता है और वो nerve fiber से घिरा हुआ होता है. इसीलिए हम अपने यूरिन को कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर सकते हैं. Sometimes due to some disease or infection, kidneys could not function properly. So the patient needs to remove the waste through the artificial kidney with a procedure called as dialysis or hemodialysis. Hemo means blood and dialysis means filtration. So here the filtration of blood takes place just like in kidneys. बेटा कई बार किसी इन्फेक्शन की वजह से या बीमारी की वजह से किडनीज अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाती, तो पेशेंट की बॉडी में ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पेशेंट को एक आर्टिफिशियल किडनी की ज़रूरत होती है और इस प्रोसेस को कहा जाता है डायलिसिस. It uses a machine filter called as dialyzer or artificial kidney. Dialysis किडनी की तरह ही वर्क करता है, बट डायलिसिस में सॉल्ट्स का, ग्लूकोज का और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता जैसे किडनी में होता है. Normally in a healthy adult, the initial filtrate in the kidneys is about 180 liter daily. रोज ऑलमोस्ट 180 लीटर ब्लड किडनीज के पास आता है जिसका फिल्ट्रेशन होता है. Now you may think how it is possible as a healthy adult has only 5 liters of blood in its body. But the same blood goes through the kidneys so many times as the removal of waste is a continuous process throughout the day. सारे दिन में ब्लड किडनी के पास कई बार आता है और उसमें से वेस्ट का रिमूवल होता है. Now our next topic is organ donation. Donation simply means दान और to give something to someone with your own will. ठीक है बेटा, किसी को अपनी इच्छा से कुछ दे देना is donation. And here we are talking about organ donations, which simply means donation of an organ, which may be done by the consent of donor or his/her family. Common transplantation includes cornea. कॉर्निया बेटा आंखों में होता है, उसका ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है. किडनीज, हार्ट, लिवर, पेंक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड इवन बोन मैरो, इन सब का ट्रांसप्लांटेशन होता है. कुछ ऑर्गन्स और टिश्यूज का ट्रांसप्लांटेशन तभी पॉसिबल होता है बेटा जब डोनर की डेथ हो जाती है और उसके फैमिली मेंबर्स के कंसेंट से ही डोनेशन पॉसिबल हो पाता है. बट कुछ ऑर्गन्स हैं जिनका डोनेशन एक जीवित व्यक्ति भी कर सकता है, लाइक किडनी, पार्ट ऑफ लिवर, लंग्स और कुछ टिश्यूज. एंड नाउ वी विल सी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. Plant to excrete waste from their body. Though plants do not have any special organ for the removal of waste,
They use different techniques for the removal of waste. प्लांट्स के पास एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, फिर भी वो अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं. कैसे? हमें ये तो पता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. पर while performing photosynthesis, oxygen is released as a byproduct and carbon dioxide is released during respiration, जिसका excretion plants करते हैं. So these waste gases are first excretory materials which are eliminated by diffusion through stomatal pores on leaves. ये gases excretory materials plants stomata के through air में diffuse करता है. Plants also get rid of excess water by transpiration in the form of water vapors. Many plant tissues consist of dead cells. We have already studied about the vacuole, which are larger in plant cells and help in storing cellular waste. जो vacuole plant की leaves में होता है, उनमें cellular waste store होता है और जो leaves के साथ ही गिर जाता है. Other waste products are stored as resins and gums, especially in old xylem. हमने पढ़ा था कि xylem के parenchyma cells में storage का काम होता है. तो old xylem cells में waste products राल और गोंद के रूप में स्टोर होते हैं. Have you ever noticed a sticky, milky or oily substance oozing out from the bark of trees? So that is latex. Plants कुछ waste substances को soil में भी release करते हैं. So hope you have understood the different techniques used by plant for the excretion of waste materials from their bodies. ये कुछ टेक्निक्स हैं बेटा जो प्लांट्स यूज करते हैं वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए. Now quickly revise what we have learned so far. Excretion is the process of removal of metabolic waste materials and other non-useful substances. In unicellular organisms such as amoeba and bacteria, the waste is removed through the general body surface by diffusion. Undigested food in unicellular animals is excreted when the food vacuole merges with general body surface and opens to outside. The excretory system in humans includes a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder, and a urethra. It produces urine as a waste product. Paired kidneys are the main excretory organs of the body. They are basically the filtration units of the human body. Each kidney is made up of tiny filtration units called as nephrons. Human excrete urea, which is a nitrogenous waste along with the urea. Liver produces urea, which is transported to the kidneys through renal artery. Each kidney has millions of nephrons and it forms a basic structural and functional unit of the kidney. Each nephron has two parts, Malpighian body and renal tubule. Malpighian body is made up of cup-shaped structure which is called Bowman's capsule, which enclosed a bunch of capillaries called glomerulus. Renal tubule has regions called proximal convoluted tubule, loop of Henle and distal convoluted tubule. The output from nephrons is called urine. When the kidney fail, a technology called dialysis has been developed. It uses a machine filter called as dialyzer or artificial kidney. This is to remove excess water and salt to balance other electrolytes in the body and remove waste products of metabolism. Blood from the body is removed and flowed through a series of tubes made up of semi-permeable membrane. A dialysate flows on the other side of the membrane which takes away all the impurities through the membrane. Plant produces two gaseous waste products, that is oxygen during photosynthesis and carbon dioxide during respiration. Excretion of gaseous waste in plants takes place through stomatal pores on leaves. Excess water is excreted by transpiration. The gums, oils, latex, resins, etc. are some waste products stored in plant parts like barks, stems, and leaves. Eventually, plants shed off these parts. Plants even excrete waste into the soil. Now, with this video, we have finished all the topics of our chapter number 6, life processes.
थैंक यू।